Morning students, welcome to your English class. In today's English class, we are going to discuss the chapter number 21 from your English grammar textbook. The title of this chapter is Comprehension Passage. We are on the page number 84 of your English grammar textbook. So kids, the comprehension passage means there will be some unread passages or unread paragraphs which you have to read, and because these passages or these paragraphs won't be there in your English textbook, that's why they are called unseen or unread. मीन्स आप इन पैसेजेस को या इन पैराग्राफ्स को पहले कभी भी आपने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, पर वो आपको इंग्लिश एग्ज़ाम्स में पढ़ के देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. दीज अनसीन पैसेजेस you will get in your exams. Those are unseen, means you have not seen them before. आपने इन पैसेजेस को या इन लेसन्स को पहले कभी भी देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, but they will come into your exam paper and you have to read them, understand them, and then answer the questions which are related to these passages. So in comprehension passage what you have to do is you have to read the given passage carefully. आपको पहले जो ये passage दिया है वो अच्छे से read करना है. You have to read the passage very very carefully, then understand what is given in this passage. After understanding and after reading the complete passage, what you have to do is you have to start answering the questions which are given below that passage. So shall we start with this new chapter, comprehension passage? So in this unit, children will find easy comprehension passages which they can solve without any assistance. So आपको बहुत ही easy टाइप के comprehension passages मिलेंगे जो आपको read करने हैं और उससे related questions आपको खुद ही solve करने हैं. So I'll read the first passage first. I saw a ship sailing on the sea, and it was deeply laden with pretty things for me. There were chocolates in the cabin. So इस पैराग्राफ का मीनिंग है फर्स्ट 4-5 लाइन्स का. वहाँ पे मैंने एक शिप देखा है जो समुंदर में सेल कर रही है या समुंदर में लहरा रही है, और वो जो शिप है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से वो शिप भरा हुआ है. वहाँ पे क्या क्या है शिप में? वहाँ पे चॉकलेट्स हैं कैबिन में, एंड एप्पल्स इन द होल्ड. एप्पल्स भी रखे होल्ड में, दिख रहे हैं एप्पल्स यहाँ पे. द सेल्स वर मेड ऑफ सैटिन. इसके जो सेल्स है, ये पर्दे हैं, ये किससे बने हुए हैं? दोज आर मेड अप ऑफ सैटिन क्लॉथ. सैटिन इज़ द टाइप ऑफ द क्लॉथ. एंड द मास्ट वर मेड ऑफ गोल्ड. और उसके जो मास्ट है वो किससे बने हुए हैं? वो गोल्ड से बने हुए हैं, यानी सोने से बने हुए हैं. द 4 and 20 sailors. हाउ मेनी sailors आर देयर इन द शिप? देयर आर 4 and 20, मतलब 4 plus 20. 4 and 20 मतलब 4 or 20. That means there are 24 sailors in the ship that stood upon the decks. वो सारे के सारे कहाँ पे खड़े हैं? वो डेक पे खड़े. This area of the ship is called deck. Were 4 and 20 white mice. कौन है ये सारे sailors? They are not human beings. They all are mice. ये दिख रहे कौन है ये सारे sailor की ड्रेस पहने हुए हैं? They all are the mice. छोटे छोटे जो चूहे हैं वो सारे ये शिप को सेल कर रहे हैं. Who are sailing this ship? The mice are sailing this ship. With chains around their necks. उन सब की नेक में क्या है? चेन्स डाली हुई है. If you can see in the close up, they all are wearing some chains in their necks. The captain was a duck. Who is the captain of this ship?
the duck is the captain of the ship. If you can see in this picture. तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं इस ship का who is the captain of this ship? The captain of this ship is the duck. He is holding this wheel of the ship which sails your ship into the, which decides the direction of your ship into the sea while sailing. So who is holding this wheel? The duck is holding this wheel and he is the captain of the ship. The captain was a duck with a packet on his back. इसके बैक में एक पैकेट है, इसके पीछे भी एक पैकेट रखा हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग. And when the ship began to move, the captain said quack quack. जब शिप ने आगे आगे चलना शुरू किया तब जो कैप्टन डक था, डक की आवाज़ कैसी थी? What is the sound of the duck? Quack quack. So this captain duck started saying quack quack when the ship started sailing into the sea. So this is the paragraph. I have explained you the meaning of this paragraph. Now what you have to do is, you have to start answering the questions. So tick the correct options. Question 1. Where was the ship sailing? Ship कहाँ पे sail कर रही थी? On the river? Ship was sailing on the river? No. On the pond? Ship was sailing on the pond. On pond मतलब छोटा सा lake या छोटा सा तालाब, उसमें शिप सेल कर रही थी कि ये? नो. ऑन द सी. येस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑन द सी. सी यहाँ पे आई सॉ अ शिप अ सेलिंग ऑन द सी. कहाँ पे शिप सेल कर रही है? ऑन द सी. क्वेश्चन 2. वेयर वर द चॉकलेट्स? चॉकलेट्स कहाँ पे थे? देखिए पैराग्राफ में लिखा होगा, पैसेज में. There were chocolates in the cabin. So answer of this question is, where were the chocolates? In the almirah? No. In the cabin? Yes, this is the right option. In a shop? No. Question 3. What were the sails made of? The sails were made of satin. See यहाँ पे होगा इसमें आंसर इसका भी. The sails were made of satin. So correct option will be the satin. Question number 3. Who was the captain of the ship? You all must be knowing who is the captain of the ship. मैंने अभी बताया था, the captain of the ship was duck, and when ship started moving, the duck said quack quack. The duck is the captain of the ship. Which of these is a describing word? इनमें से कौन सा जो है वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो हमें बताना है. शिप इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड? नो. शिप इज़ द noun, name of a thing. Stood is the noun? No. Stood is the verb. Stood क्या है? एक verb है. Stood मतलब खड़े रहना. Stand का past verb, past tense क्या है? Stood. Stand का past tense है stood. So stood can't be the describing word. Stood is the verb. Pretty, yes, pretty is the describing word. Pretty can be the describing word. So correct option is the pretty. Pretty is the word which is used to describe your noun. किसी भी noun को जो word describe करता है, the word which describes your noun is called describing word. जो भी कोई word हमें हमारे नाम की विशेषताएं बताता है या noun की विशेषताएं बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम? describing word. The word which describes about the noun is called describing word. So pretty. Over here, describing word is pretty. Have you read this word pretty into the passage? Yes. See here, with pretty things for me, and it was deeply laden with pretty things for me. तो यहाँ पे चीज़ें जो रखी थी वो कैसी थी? Pretty, अच्छी अच्छी चीज़ें. तो pretty word describing your noun things. Okay, so in this way we have completed with the first unseen passage. Now we will move on to the next unseen passage.